friends. Today we are going to do prepositions. Now, prepositions is one part of speech which is slightly more difficult than the rest of the parts of speech. और सबसे बड़ी बात यह है, डिफिकल्ट तो है ही थोड़ा बहुत, लेकिन हर पेपर में आपसे prepositions पूछे जाते हैं. 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, कहीं भी, whatever class you may be in, prepositions are invariably asked of you. Therefore, they become extremely important and crucial for your papers also. So therefore, please pay clear-cut attention. I'll make certain points before we start on the prepositions. Prepositions में the first thing to note is that the prepositions are function words. They rarely, very few prepositions have meanings. Very few prepositions have meanings. They are mostly function words. Now, what do you understand by function words? See, there are so many things that do so many other things. A mobile can work as a torch. It can work as a watch. It can also make you call. You can also write notes. So there are so many functions that a mobile phone performs. Similarly, prepositions also perform various duties. When we talk of them, we shall be telling you how these prepositions perform their functions. Now, some will be, I'll tell you that this is not a function word, this is a function word. And so you don't have to worry about looking up the meanings in the dictionary. और फिर भी अगर आप डिक्शनरी में जाते भी हैं, आप in देख लीजिए. In is a very common preposition that you use. इंग्लिश की डिक्शनरी में उसके 40 to 45 meanings लिखे हुए हैं. They are not meanings, they are functions. 40-45 functions that in performs. I or any other teacher for that matter, कोई भी 45 के 45 यहाँ लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिख नहीं सकता, समझा नहीं सकता, फिर आपको याद नहीं रह सकते. तो हमने क्या किया है कि हमने फंक्शंस के इंपॉर्टेंट थिंग्स को रख दिया है और उसमें बहुत सारे जितने भी हो सकते थे हमने आपको एग्जांपल्स दिए. मैंने एक जमाने में, I'll tell you, I saw a preposition dictionary. It was for around 2000 rupees, which at that time was quite too much for me. And that book, and you won't believe it, it was at least 2 feet thick, 1 foot wide and 1 foot long, 2 feet thick. And there were prepositions with, let's say, allude. Allude के साथ क्या क्या prepositions चल सकते हैं, कहाँ कहाँ चल सकते हैं, उसके sentences वगैरह लिखे थे. So it was a very difficult sort of a thing. I am going to give you examples. Now, first point I've written you. Second point. Please do not translate a preposition, obviously would be English. देखिए, आपकी नेटिव टंग बंगाली हो, मराठी हो, महाराष्ट्रियन हो, तमिल हो या हिंदी हो या पंजाबी हो, कोई भी हो, लेकिन उससे प्लीज prepositions को ट्रांसलेट नहीं कीजिएगा. अगर आप ट्रांसलेट करेंगे, आप ज्यादातर, आई कैन गारंटी, यू विल गो रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू क्लियर कट एग्जाम्पल्स. देखिए, हिंदी, मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मैं ये कहता हूं हिंदी में
मैं क्लास में था। टीचर क्लास में आई। मैं क्लास में सो गया। सिंपल सी बात है, मैं क्लास में सो गया, सभी बच्चे सो जाते हैं, तो कोई ऐसी बात बड़ी बात नहीं। अब इसी को अगर हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई वॉज इन द क्लास। टीचर केम into the class. I fell asleep during the class. अब देखिए यहां पे ये में सारे prepositions हैं और इन सब की जगह यहां पे क्या लगा? In, into, during। तो यहां पे सबके लिए हमने अलग अलग वर्ड्स यूज किए। हिंदी में आपने सबके के लिए एक ही वर्ड्स यूज करे। तो अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हर जगह इन लिखते रहेंगे, विच विल बी रॉन्ग। Therefore, please, I request you, never translate from your native language into English, particularly the prepositions. Right, we have done this. Now, okay, I have told you 3 points. There were no place to rub करना पड़ा, I'm sorry. Third point क्या है इसका prepositions का, which is also very important. A preposition is a word placed after a verb or a noun to connect the two words. Is that clear? Now, another thing is fourth, the word after a preposition is always a noun or a pronoun. Now, अब आपको मैंने बता दिया the word after a preposition is always a noun or a pronoun. Pronoun के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको pronoun पढ़ाया है कि pronoun of the subject form, जैसे him, her, its, etc. ये आपको पहले पढ़ाया उसमें प्रोनाउंस के सेक्शन में। तो प्रोनाउन अगर होगा तो ऑब्जेक्ट फॉर्म, सॉरी, अरे बाप रे, द प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म। लिखने में गलती होगी, वो वर्ड्स सेम है, दे हैव टू बी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको चलता हूं प्रोनाउन पे लेके चलता हूं। पहले हम करेंगे इन।
फंक्शन वर्ड। इन, अब इन के मैं आपको यूजेस बताऊंगा। यहां पे 1 2 3 करके यूजेस लिखूंगा और फिर उसके एग्जाम्पल्स दूंगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जिस वर्ड के आगे एग्जाम्पल्स, वर्ड के आगे एग्जाम्पल्स, जिसमें भी एग्जाम्पल को मैं अंडरलाइन करूंगा, उसका ध्यान रखिएगा कि उस वर्ड के साथ वो ही प्रेपोजिशन चलेगा, कोई और नहीं चल सकता। प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। In is a function word. One, we use in when we think of a place within boundaries. When we use in when we think of a place within boundaries. Let's say, in my school, in the college, in India, in my pocket, in the room. So all these tell you that we are using in when we think of a place within boundaries. Now we can say, in my mind, in the river, in the evening, in the court. ना आप कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें से आपको जितने भी वर्ड्स दिखेंगे सभी में आपको बाउंड्री समझ में आ जाएगी। अगर आप कहते हैं इन माय पॉकेट, तो पॉकेट की भी बाउंड्री है। अगर आप कहते हैं इन माय पर्स, तो पर्स की भी बाउंड्री है। स्कूल, कॉलेज, इंडिया, कंट्री, हर एक की बाउंड्री है। जब आप सोचते हैं इन योर माइंड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस विद अ बाउंड्री, देन यू यूज इन। दैट इज only the first part of using. Let me name it A, because A तो हो ही गया, तो इसका A usage A लिख देता हूं मैं, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। Yes, now we come to point B. In is used with periods of time. For example, in a minute, in centuries, in Akbar's reign. So that is how we use with periods of time. Then we come to C. In is used with means of Now, why do we use it with means of transport? We use in with means of transport when the focus, मैं लिखूं इसको? Okay. When the focus is on the passengers or on the facilities
available or not available in that means of यानी कि इसका मतलब यह है कि जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फेरी हो सकती है, शिप हो सकती है, बोट हो सकती है, हवाई जहाज, बस, ट्रेन, ट्रक, जो भी कुछ जिससे आप ट्रैवल कर रहे हो, बैलगाड़ी, तो आप सबके लिए वो होना बहुत जरूरी है। ये याद रखना कि फोकस आपका पैसेंजर्स पे अगर है तब आप इन यूज करेंगे, उसमें फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नहीं अवेलेबल है, उनके बारे में बात करेंगे तब भी इन लिखेंगे। आई शैल टेल यू एन एग्जांपल। Available, not available, that means of transport. For example, I'll tell you, the AC was not working in the train. So, in the train, we are using it because it focuses on the facility that was not working. We can also say the passengers were smoking in the bus. Is that very clear? In the train, the toilets were dirty. Again, in the train. So, means of vehicle के साथ आप इस तरह से यूज करते हैं। Now, ये मैंने आपको A, B, C 3 पॉइंट्स बता दिए। अब मैं आपको लिखने जा रहा हूं इसका फोर्थ पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डी, और ये मैं यहां लिखूंगा ये सारा, बिकॉज दीज आर ओनली द एग्जाम्पल्स यू कैन यूज in a ring, in ink. Now remember, मैं जब भी prepositions पढ़ाऊंगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम्पल हाईलाइट करूंगा, इसको सर्कल कर रहा हूं मैं। इसका मतलब यह है कि इंक के साथ कोई और preposition यूज नहीं होगा। You will always have to use in, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। He wrote the letter in blue ink, he wrote the letter in blood, कुछ भी he wrote the letter with blue ink नहीं होगा। Is that very clear? Please keep that in mind. मैं दो चार जगह है ऐसी जहां ये आपको वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। In a ring, in the playground, in the previous century, in the sky, in the planet. You can, I'm continuing here because there are lots and lots of in love, in anger, in a rage, in his backpack, in the कॉरिडोर। एनीवे, ये बहुत सारे हैं, आप जितने मर्जी लिखते चले जाइए, इनका कोई अंत नहीं है। सो हम इन यहां रखते हैं।
अभी मैंने आपको 8 मिनट्स हो गए हैं एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू। अभी मैंने सिर्फ इन की बात करी है। आज मैं चाहता था कि एट और ऑन भी पढ़ा दूं, लेकिन उसमें टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम होता चल जाएगा। सो मे बी वील मेक 5 पार्ट्स, but I need to teach you all the basic prepositions. Is that very clear? Thank you for today.